फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। Okay, so let's derive the relationship between drift velocity and current density. So let's consider one conductor. So battery of voltage V is applied. So this is positive terminal, this is negative terminal, this is key. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा in this direction. Okay, so we are having electrons inside this conductor. So electrons get accelerated towards that positive terminal with some drift velocity Vd. Area of this cross section is, let's say, A. Length of conductor, that is, let's say, L. Okay. So let E is electric field. Then A, that is cross sectional area. L, that is length of conductor. Then Vd, that is drift velocity, and T, that is time interval. Okay, so let's derive the relation between the drift velocity and current density. So सबसे पहले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड क्या है? Vd, डिस्टेंस दैट इज L, और टाइम इंटरवल क्या है? T. तो लेंथ दैट इज इक्वल टू Vd इंटू T. ठीक है, ये पहला इक्वेशन मिल गया. उसके बाद वॉल्यूम निकाल लो. वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ. तो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A, और लेंथ दैट इज Vd इंटू T. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, उसके बाद नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर unit volume, that is called number density of electrons. Let's say small n. So total number of electron divide by volume per unit volume. ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे हमने निकाला. तो n अपॉन a Vd इंटू T. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? That is n is equal to n a Vd into T. This is the third equation, that is total number of electrons. ठीक है, कितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है? तो टोटल चार्ज by क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन क्या कहता है? Q is equal to n dot E. तो n का वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास. तो Q is equal to small n a Vd T dot E. So this is the fourth equation that we got. Now see, if you want relationship between drift velocity and current, okay, you can have relation of drift velocity and current. So in simple terms, you can write current is equal to total charge upon time. So NA Vd
टी डॉट ई अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो करंट I इज इक्वल टू क्या आएगा, एन ए ई वी डी। ओके, so this is the relationship between drift velocity and current.